Lordship, I am praying for time adjournment. आप तो टाइम मांगने के लिए आते हैं तिवारी जी, कभी बहस भी तो कर लिया करो। पहली बार लगाया क्या ये मैटर? नहीं। दूसरी बार। हाँ, फिर पहली बार एडजॉर्नमेंट दे चुका हूँ, एडजॉर्नमेंट नहीं दूंगा। आपसे पूछ लेता हूँ, पहली बार में मैं कभी मना नहीं करता आपको एडजॉर्नमेंट देने के लिए, क्योंकि आपको खड़ा ही मेरे कोर्ट में एडजॉर्नमेंट लेने के लिए किया जाता है। दूसरी बार नहीं दूंगा मैं एडजॉर्नमेंट, सॉरी। बहस करिए। Lordship, I am gone through the case, Lordship, but हाँ, you argue this matter, please. बताइए। Lordship, but I am not aware of what defense. मैं इसमें लिखा देता हूँ that he is not aware of the facts of the case and is standing only to seek adjournment. Prayer for adjournment is denied. Lordship, I am praying for Passover. लिखिएगा, पूरा लिखिएगा इसमें। श्री धीरज तिवारी, learned counsel for the applicant, prays for adjournment. Full stop. On perusal of the file, it reveals that on last date, that is 25/7/2022 also, case was adjourned on request of Shri Dheeraj Tiwari. Full stop. When he is asked to argue this matter, he submits that he is not aware of the facts of the case. Full stop. This reflects a very sorry state of affairs that a counsel is standing without having knowledge of the file. लाए नहीं है, केस की फाइल है नहीं है आपके हाथ में, Yes. without having knowledge of the facts of the case. Full stop. At this stage, Shri Tiwari prays for Passover. On his request, case be taken up in Passover round. इसको टाइप करके साइन करवा लीजिएगा, पासओवर में रखिए। आप लोगों ने बिल्कुल मजाक बना रखा है कोर्ट का।